18 साल की उम्र में, when everyone is looking at you and everyone is expecting you to be at your best behavior, never say anything wrong, it's tough. And because I was a pageant winner, I was expected to be perfect in every way, which a lot of girls are when you're coming into the field through that. And the pressure of all of that was, I didn't know what my next step was, but it was thrust upon me because अगर आप pageant जीतते हो तो फिल्में आपके पास आती ही हैं. अभी मैंने सोचा that was the natural progression. And sure, it must have been. I feel like it was some form of divinity where, you know, I was made to find my vocation, या जो भी मेरा future था मुझे मिला. किसी तरह से भगवान ने मुझे उस दिशा में भेजा. And the one thing that I think is persistence in your goal, like Bhumi, or persistence in making every day successful. Yeah. Both will take you to the journey of success. So you wake up in the morning and you say, आज मुझे क्या achieve करना है? आज मुझे जो भी आपका होगा, आज मुझे ये मास्टर क्लास करनी है, आज मुझे घर जाके ये करना है, जो भी है. Whatever your achievement of the day is, think about that in the morning. When you wake up, आप coffee पी रहे हो, आप जो भी कर रहे हो, think about what you want to achieve during the day and just do that. If you get, जैसे मैं example हमेशा देती हूँ, जैसे exams होते हैं ना, final exams, तो अगर आप अपने हर test में अगर आपको A आया, तो the final exams are not that difficult ना, because then you're not pressured. And I was always a last minute student, don't get me wrong, or most of us are last minute students. But in life, if every day is a pursuit of excellence in your future or in your profession, in your personal life, just a pursuit of excellence. And it doesn't mean every day will be excellent, but you're pursuing it. Suddenly when you look back, like me 23 years later, I'm like, all right, I did okay. But all I did was every single day just put my head down and say, आज मैं survive कैसे करूँगी? क्योंकि मेरा हाथ पकड़ने वाला कोई नहीं था, मुझे सिखाने वाला कोई नहीं था. मेरे parents doctors बेचारे, उनको क्या मालूम फिल्म इंडस्ट्री कैसे चलती है, एक्टिंग कैसे होती है. तो मैंने एक चीज़ याद की जब मैंने फिल्में शुरू की. मैं मॉनिटर पे बैठी थी. एक बार मैंने हेयर मेकअप कर लिया. I used to come to set and I used to always just sit behind the director. अभी भी मेरी ये बड़ी बुरी आदत है. Some directors feel like I'm always on there, but I like to sit on set. I don't usually go back to my van after I have come out because I learn choices. अब अगर आप मैं चुपचाप बैठती हूँ, अपना ओपिनियन नहीं देती क्योंकि वो मेरा काम नहीं है. डायरेक्टर का काम डायरेक्टर का काम है, एक्टर का काम एक्टर का काम है. एंड वी आर वेसल्स एज एक्टर्स, वी आर गिवन वेट. आप लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं हम लोगों को. हमारा काम सिर्फ एक्शन और कट के बीच में आता है, बाकी कितने सारे लोग करते हैं. हमारा फेस पोस्टर पे होता है, बट काम एक्शन और कट के बीच में होता है. येस, ऑफ कोर्स यू हैव टू ब्रिंग टू लाइफ किसी लेखक की कहानी या किसी निर्देशक का विजन, उसको हमको समझना है, and then we have to bring it to life. That's our job. But it's a limited job. We stand on the shoulders of at least 200 people. Yeah. At least. There's no chance that we would be able to do what we do if all of those people didn't exist, right? So it humbles you. It puts you in a place. So मुझे set पे बैठना बड़ा अच्छा लगता है और मैं सुनती हूँ कि डायरेक्टर ने ये, you know, इस शॉट को क्यों ऐसे डिसाइड किया, या फिल्म मेकर ने और जो डीओपी ने, कैमरामैन ने ये लेंस क्यों डिसाइड किया. Why are we now coming closer to my face when I'm giving this emotional monologue, suppose? तो जो डायरेक्टर्स की अगर आप चॉइसेस या आप फिल्म मेकर्स के साथ उनको ऑब्जर्व करना शुरू करें एज फिल्म स्टूडेंट्स और एज सिनेफाइल्स, that makes you learn so much more of intention. And that doesn't necessarily only mean in our job. सिर्फ सिनेमा में नहीं, इंटेंशन हर चीज़ में इम्पोर्टेंट होती है. आपका क्या इंटेंशन है हर सुबह का, आपका क्या इंटेंशन है जब आप काम पे जा रहे हो, जो भी आपका काम हो, या आपका क्या इंटेंशन है जब आप किसी से बात कर रहे हैं. इंटेंशन अगर आपको मालूम है, आपकी ज़िंदगी बहुत सही रहेगी. एंड आई थिंक नाउ ऑब्वियसली आई कैन से ऑल दिस इन रेट्रोस्पेक्ट. व्हेन आई वाज डूइंग इट मुझे नहीं मालूम था मैं कर रही थी, बट आज मास्टर क्लास के बारे में बात कर रहे हैं तो दिस इज एन एक्सपीरियंस थिंग. फॉर मी परसिस्टेंस वाज इम्पॉर्टेंट, and every day trying to be like, all right, I'm going to keep my head above water and look back 5 days later, you know, you did it. Yeah. I want to ask you something. You know, after Miss World, you got your first film. You got your initial few films. And what was that moment when you realized, okay, now I can choose what I want to do? Oh, many films later. I think around, after Krish maybe. Yeah, probably after the first Krish, maybe, somewhere there. Before that, it was always oh my gosh, what's the next one I'm going to do? What is the opportunity that's going to come to me? I picked from what came to me.
After the first Krish, I think I was, because I had just done Etraz as well, and I had just done Krish as well. I had done work which gave me a solid foundation. I got critical acclaim. I had people telling me I know my job, even though I didn't know I knew my job. But that is when I started, that was a very clear time when I started seeking work that would challenge me. Like fashion was a time when I took that decision. It was right around Krish. And I remember Madhur sir and I met, and at that time I was told कि लड़कियाँ फीमेल ओरिएंटेड फिल्म सिर्फ अपने एंड की करियर के एंड में करती हैं नेशनल अवार्ड के लिए. तुम्हारी तो अभी शुरू हुई है. You just done Krish, you just done Etraz, you're having such a moment. फीमेल ओरिएंटेड फिल्म्स क्यों कर रहे हो? उस जमाने में ज़्यादा होता भी नहीं था. This is early 2000s, like 2005, 6, somewhere there. But I just didn't know any better. I loved the script. I loved what Madhur was talking about. हम लोग 6 महीने बैठे, I remember.